हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है नेचर विद नितिन। सो गाइज, आज की जो डेट है दैट इज़ 1 सितंबर 2023। इट्स रियली स्पेशल एक्चुअली। आई वोंट से स्पेशल बट एक इम्पॉर्टेंट डेट है आज का। एंड 84 ईयर्स अगो आज ही के दिन 1 सितंबर 1939 को जर्मनी नाज़ी सेना ने अटैक किया था पोलैंड पे, वॉर्सो पे। एंड 2 दिन के बाद दैट इज़ 3 सितंबर 1939 फ्रांस एंड यूके ने वॉर डिक्लेयर किया था जर्मनी पे। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैज़ बिन स्टार्टेड। सो गाइज, आफ्टर 84 ईयर्स आई एम सो ग्लैड। फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से मैं स्कूल में वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा करता था। एंड आई एम फील सो लकी दैट कोइंसिडेंट, इट्स अ कोइंसिडेंट कि आज ही के दिन आई एम गोइंग टू पोलैंड, वॉर्सो। सो यस गाइज, आप देख सकते हो फिलहाल मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ एंड आई एम ऑन द वे फॉर पोलैंड ट्रिप। 3 days का ट्रिप होगा मेरा। आई विल बी कवरिंग 2 cities. फर्स्ट इज़ वॉर्सो एंड देन सेकेंड सिटी आई विल बी कवरिंग इज क्रैको। सो गाइज, मेरी फ्लाइट डिटेल फ्लैश हो चुकी है। इट्स वॉर्सो, फ्लाइट नंबर W62467। सो आई विल बी हेडिंग फॉर चेक इन नाउ। सो गाइज, हमेशा की तरह बुडापेस्ट ड्यूटी फ्री। गाइस, एयरपोर्ट पे आई मेट वन ऑफ माई सब्सक्राइबर। का नाम है समीर एंड ये पोलैंड में रहता है। आई थिंक 3 साल से वॉर्सो में रहता ही है। सो गाइस, यही है वीज़र की फ़्लाइट जो विच आई विल कैच फॉर वॉर्सो। सो गाइस, अभी मैं बस एयरपोर्ट से मैंने बस कैच की थी, बस नंबर 175। एंड आई एम जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स ओल्ड टाउन स्क्वायर। सो बेसिकली 75 मिनट्स की जो टिकट होती है, एज आई मेंशन अराउंड 4 zloty की होती है। एंड जो 1 day का पास है दैट इज़ अराउंड 15 zloty। ये है ओल्ड टाउन स्क्वायर का एंट्रेंस और यहीं पर आपको रॉयल पैलेस दिखाई देगा। दिस इज़ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग रॉयल पैलेस। बेसिकली दिस वाज बीन होम ऑफ पोलिश रूलर्स ओवर द सेंचुरीज। इसको बहुत बार कॉन्क्रीट करने की भी कोशिश की गई थी काफ़ी स्टेज के पीछे। सेंट जॉन्स आर्क कैथेड्रल। बेसिकली ये एक रोमन कैथलिक चर्च है जो ओल्ड टाउन में ही है। एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो रॉयल पैलेस के बाजू में ही है। सो यू कैन विजिट दिस प्लेस एज वेल। गाइस, आप मेरे पीछे जो चर्च देख रहे हो, दिस इज़ नोन एज जेसुइट चर्च। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज चर्च ऑफ ग्रेशियस मदर ऑफ गॉड। ये बिल्ड किया गया था बाय किंग सिंगिस्मुथ III वासा और 1606 से लेके एंड आई थिंक मे बी 1606 और 1626 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल चर्च। सो इफ यू कमिंग नियर बाय रॉयल पैलेस, विजिट दिस प्लेस एज वेल।
गाइस फिलहाल जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ दिस इज़ ओल्ड टाउन स्क्वायर। ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। सो गाइस ये है वॉरशो राइजिंग एग्जीबिशन। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यहाँ पर उन्होंने छोटा सा एक मिनिएचर बनाया है जब वॉर हुआ था और जो इम्पैक्ट हुआ था। It started on August 1st, 1944 and ended in October 2nd, 1944. It lasted 63 days, basically, under German occupation. Okay, so basically this Warsaw Rising battle, it lasts for 63 days. Yes, it lasted for 63 days. Okay, and it was for the independence of the Poland. Yes, from the German and from the Soviet domination. Yeah. It was meant to welcome Soviets not in Germany, not in occupied Germany, but in Poland. Okay, so there were two parts, right? Some part was occupied by Germans and some part was occupied by Soviet as well. One part is occupied by the Germans, like the Poland and the Germany, the Third Reich, basically. And then there's the Soviets on the other bank of the river. This is General Ściborylski's leather briefcase that he used to carry basically during the whole war. Like the usual things you carry in a leather briefcase, like reports, orders, and everything you may find useful. Okay. He was one of the uprising's leaders. The main leader he was. Yes, main tactics leaders. Sergeants used to identify each other from the civilian population and Germans. Okay. Because they were using lots of captured rifles, captured uniforms, and captured helmets. So to basically eliminate the possibility of friendly fire, they were wearing armbands like this, like you can see on the pretty much every picture, like here on the. During the uprising, children took part in it too, but mainly as basically either nurses or medics. Medical field people. Yes, and Yeah, I can see some medical equipment. Yes, this is basically used by Jolanta Zawadzka-Kolczyńska, and she was a paramedic during the uprising. Oh, okay. Yes, and that's basically what. This was the basically improvised first aid kit that she was using to treat the wounded. Is that a lady? No, that's not her. Okay. That's Wanda Traczyk-Stawska, and she was, if I remember correctly, like 14 or 15 during the uprising. She was a medic too, but she also fought, like in fulfilled combat roles. Oh, okay. Here are some basically weapons that were used during the Warsaw Uprising.
Here we can see just a regular German Mauser 98K. That was most likely captured from the Germans because it was found basically years later after the war. That they will basically get through the river and help them with the Germans. But that didn't happen, and the Soviets waited here until basically Germans destroyed pretty much 80% of the city, and the uprising fell because they had no chance of winning this long term. 63 days is a very long time for an insurgency. It was one of the, if not the most successful insurgency in occupied Europe in World War II. Yeah, okay. And Warsaw was been very badly destroyed in World War II. Yes, it was destroyed pretty much completely. 80% of the city was destroyed. That's pretty much everything. It took 7 years to rebuild the city after the war. Okay. So that's a very, very long time. It shows the scale of. So guys, ये है वॉरशो राइजिंग मॉन्यूमेंट और जैसे मैंने आपको दिखाया तो उसके बाजू में ही वॉरशो राइजिंग एग्जीबिशन सेंटर है. प्लीज़ डू विजिट देयर इज़ अ गाय कॉल्ड फिलिप. उसने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. So yeah, this is really worth visiting this place. It's free of cost as well. So guys, आप जो भी टिकट परचेस करोगे आपको इसमें पंचिंग करना होता है. सो आपका टाइमिंग होगा. फॉर एग्जांपल अभी मैंने 20 मिनट्स की टिकट ली है, तो जैसे मैं इसको पंचिंग करता हूँ मेरा टाइम स्टार्ट होता है एंड टिल व्हाट टाइम इट इज़ वैलिड यहाँ पर प्रिंट होकर टाइमिंग आएगा. सो विद इन दैट टाइम यू कैन डू योर जर्नी. सो गाइस, दिस इज़ दी हॉस्टल ANO. काफ़ी बड़ा हॉस्टल है ये. जब अब तक जितने भी मैंने यूरोप के हॉस्टल में स्टे किया है उनमें से काफ़ी बड़ा हॉस्टल दिखा है मुझे. यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. जैसे मैंने आपको दिखाया किड्स सेक्शन है, देन यहाँ पर इनका वेटिंग एरिया है और रिसेप्शन ऑल्सो देयर. काफ़ी चीप भी है. आप मेरे पीछे जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग देख रहे हो और दिस इज़ पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस. बेसिकली ये बिल्डिंग सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग है वॉर्सो एंड अक्रॉस द पोलैंड. बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1955 में. इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1952 में. इट वॉज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पोलिश पीपल्स रिपब्लिक एंड सोवियत यूनियन, एंड दोनों के एग्रीमेंट से ये प्लान बनाया गया था टू कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग. अराउंड 4,000 to 5,000 Soviet workers or around 3,000 to 4,000 Polish workers were involved to build this beautiful building. So yeah, if you're coming to Warsaw, please do visit this place as well.
तो गाइस आप मेरे पीछे छोटा सा टावर देख रहे हो, दिस इज बेल टावर ऑफ सेंट एंड चर्च। ये भी काफ़ी प्यारा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे लोग इसको विजिट करते हैं। वहाँ पर ऊपर एक टेरेस है गाइस, एंड यू कैन गो देयर एंड विजिट दिस प्लेस एंड यू कैन हैव अ टॉप व्यू ऑफ द सिटी। So guys, आप मेरे पीछे जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ रॉयल पैलेस एंड दिस इज़ ऑल्सो टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ वॉर्शो का बीच में ही है। आई थिंक इट्स एट द एंट्रेंस ऑफ द ओल्ड टाउन। सो या आई ट्राई टू शो यू। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट वॉर्शो। अभी फिलहाल मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, वॉर्शो बस स्टेशन पे। फ्रॉम दिस मेरी बस है फ्लिक्स बस फॉर क्रैको। जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा गाइज वो भी दैट विल बी ऑन क्रैको।